नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज आषाढ़ सुदी 14, जिस दिन चातुर्मास की स्थापना की जाती है, इसके पूर्व में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण को संपन्न कर लिया गया है और उसके उपरांत वर्षा योग के संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ ये संकल्प लिया जा रहा है कि वर्षा योग प्रारंभ करने के लिए इसके भक्तियों के पाठ के पश्चात वर्षा योग संबंधी क्या विशेषताएं होती हैं, उस संबंधी कुछ विषय आपके सामने रखा जाएगा। सर्वप्रथम भक्तियों का पाठ किया जा रहा है। अथ वर्षा योग धारण वेलायाम श्रीमद् सिद्ध भक्ति कायु सर्गम करोमि। सिद्धानुभूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्मस्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टतुष्ट सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुणगणोचादिदोषापहारात् योग्योपादान युक्त्यादृशदयेता हेम भावोपलब्धि नाभाव सिद्धिष्टा न निजगुणहतिस्तप्तपोभिर्न युक्ते अस्त्यात्मानादिबद्ध स्वकृत से फलभुक्तक्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितरूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुणितो नान्यता साध्य सिद्धि सत्वंतर्वाये तो प्रभो विमल सदर्शन ध्यानचर्या संपद्येति प्रगातक्षतदुरिततया व्यंजिता चिंत्यसारी कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्पलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमान जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरुतं संप्रतिपन्मितन्वन् धुन्वन् भान्तं नितान्तं निश्चितमनुपमं प्रीणयन्निशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासोक्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवर्तो चन्दनशेषानशेषा निगलबलकलिस्तैरनन्तस्वभावै सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुगुणैक्षायिकैः शोभमान अन्यश्चान्यव्यपोह प्रवन विशेषं प्राप्ति लब्धि प्रभावै रोद्भं व्रज्जा स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठते गृहे अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीन प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृतिरुचिराकारे वयमूर्ध क्षुतृष्णाश्वासकाश
ज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह व्यापत्यादुग्रदुःखप्रभवभवहते कोस्य सौख्यस्य माता आत्मोपादानसिद्धं स्वयमत्सेवत्वेतवादं विशालं वृद्धिरासव्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं नार्थक्षुत्रुट्विनाशात् विविधरसवितैरन्नपानैर्शुचा नास्पृष्टैर्गन्धमालिर्नैमृदशेनैर्ग्लानिनिद्रादिभावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थ दीपानर्तक्यबद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते तादृक्सम्पत्समेता विविधनयतपसंयमज्ञानदृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितदयस्सु विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्त सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टे स्थान् सर्वान् नौमिनन्तानि जगमीश्वरं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स लघुलभते परमसुखम् इच्छामि वन्ते सद्भक्तिकामसुकोदसालोचं सम्मुनान् समुदंसनं संसर्जुत्तानम् अट्टवीकं विमुखान्मट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डलोय मध्यमे पैठियानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं तिरुशुद्धानं अधीधनाग्धवट्टमान कालत्वं शुद्धानं सौशुद्धानं सयनिष्कलमंचे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखखौ कमखौ भूयिलाव सुवैगमनं समायमरणं जनगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथो वर्षायोगधारणवेलायां श्रीमद् योगिभक्तिकायोत्सर्गं करोमि। जाति जरूर रोग मुरना दुर्शोक सहस्रदीपिताः दुस्सनरक पतन संत्रस्त धिया प्रतिबुद्ध चेतस जीवितमंबु बिंदु चपलम तडिदभ्रसमाभिभूतय सकलमिदं विचिन्त्य मुनय प्रशमाय वनान्तमाश्रिताः व्रतसमिति गुप्त संयुताः शमसुखमाधाय मनसि भीतमोहा ध्यानाध्ययनवशङ्गताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति दिनकरकिरणनिकर सन्तप्तशिलानिचयेषु निःस्पृहा मलपटलावलिप्ततनवशिथिलीकृतकर्मबन्धनाः व्यपगतमदनदर्परतिदोषकषाय विरक्तमत्सराः गिरिशिखरेषु चण्डकिरणामिवगस्थितयो दिगम्बराः सज्ञानामृतपायवे क्षान्तिपयशुच्यमानपुण्यकायैः धृतसन्तोषछत्रकैस्तापस्तीव्रोऽपि संयते मुनीन्द्रैः शिखिगलकज्जलालिमलिनैर्विबुधादिपचापचित्रतैः भीमरवै विसृष्टचण्डासनशीतलवायुवृष्टिभिः गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तपोधनाः पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु विशङ्कमासते जलधारा शरताडिता न चलन्त्यचरित्रतः सदा निःस्पृहा संसारदुःखभीरव परिषहारातिघाति न प्रवीराः अविरतबहलतुहिमकणवारि विरम्र कणवारिरङ्ग्र पपत्रपातनैः रणवरतमुक्तसाधकारवै परुषैरतानिलय शोषितयात् गात्रयष्टय ये श्रमणाधृतिकम्बलावृताः शिशिर्निशां तुषारविषमां गमयन्ति चतुष्पथे स्थिताः इति योगत्रयधारिण सकलतपशालिन प्रवर्धपुण्यकायाः परमानन्दसुखैषिण समाधिमग्रं दिशन्तु नो भदन्ताः गिम्मे गिरिशिरत्ता
वर्षायाधेरुक्कमूलरहिणीषु शिशिरे स्वाहिर्सैनाते साहु वन्दिमो नित्यं गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परिमां गतिम् इच्छामि वन्ते योगिभक्तिकामसौकोदसालोचिम् अड्ढाजिदिवदो सुमदेशो पन्नार्धकमुमेषु आदावनरुक्कमूलभुवासठानमो निर्वीरासने कपासकुक्कुडासन चौचपक्ककवनादियोगजुत्तानं सौ सावनं सैनिचकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखकोकमको विलाव सुगैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथो वर्षायुगधारणवेलायां श्रीमच्चैतभक्तिकायोत्सर्गं करोमि। श्री गौतमादिपदमद्भुत पुण्यबंध मुद्योतिताखिलममोघमगप्रग्नाशं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्धितार्थं जयते भगवान् हेमाम्बोजप्रचारविजृम्भिता वमरमुकुटछायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितो कलुषहृदयामानोद्भ्रान्ता परस्परवैरिणा विगतकलुषा पादो यस्य प्रपद्यविशस्वसु तदनु जयते श्रेयान् धर्मप्रवर्धमहोदय कुते विपतक्लेशाद्योषो विपाशयति प्रजाः परिणतिनय सांगी भावाद् विविक्तविकल्पितं भवतो भवतस्त्रात्रित्रिदा जिनेन्द्रवचोमृतं तदनु जयता जैनिविते प्रभङ्गतरङ्गिने प्रभव विगम द्रव्य स्वभावविभाविने निरुपम सुखस्येदं द्वारं विघट्ट निरर्गलं विगतरजसं मोक्षं देयान्निरत्ययमव्ययम् अर्हसिद्धाचार्यो पाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्द्येभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः मोहादिसर्वदोषा ऋघातकेभ्यः सदा तरोजोभ्यः विरहितरस्कृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो रद्भ्यः क्षान्त्यार्जवादिगुणगण सुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मं जनेन्द्रोक्तं मिथ्याज्ञानतमोव्रत लोकैकज्योतिरमितगमयोगी साङ्गोपाङ्गमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवनविमानज्योतिर्व्यन्तरनरलोकविश्वचैत्यानि त्रिजगद्विवन्दितानां त्रेधा वन्दे जनेन्द्राणां भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयादिपाप्यर्चतीर्थकर्तॄणां वन्दे भवाग्निशान्ते विभुवानामालयालिस्ता इति पंचमहापुरुषा प्रणुता जनधर्मवचनचैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुधजनेष्ठाम् अकृतानि कृतानि च प्रमेद्युतिमन्त्यद्युतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजामरपूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रये जनानां द्युतिमण्डलभासुराङ्गयष्टि प्रतिमाजनोत्तमानां भुवनेश विभूते प्रवृत्ता वपुषा प्राञ्जलिरश्मि वन्दमान विगतायुधविक्रिया विभूषाः प्रकृतिस्थाकृतीनां जनेश्वराणां प्रतिमाग्रहेषु कान्त्या प्रतिमाकल्मषशान्तये विवन्दे कथयन्ति कषाय मुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानां प्रणमामि विरूपमूर्तिमन्ते प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानां यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं
सुकृतं दुष्कृतवर्त्मरोदितेन पटुना जनधर्मयेव भक्तिर्भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे अर्थां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदां कीर्तयिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धिविशुद्धे श्रीमद्भवनवासस्था स्वयं भासुरमूर्तय वन्दितानो विधेयासु प्रतिमा परमां गतिं यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन्न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ये व्यन्तर्विमानेषु स्तेयांस प्रतिमाग्रहा ते च संख्यामतिक्रान्ता सन्तु नो दोषविच्छदे ज्योतिषामतलोकस्य भूतयेद्भुतसम्पद ग्रहा स्वयंभुव सन्ति विमानेषु नमान्वितान् वन्दे सुरकिरीटाग्रं मणिच्छायाविशेषणं या क्रमेणैव सेवन्ते तदर्शा सिद्धिलब्धये इति स्तुतिपतातीत श्रीवृतामर्ता मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रवनिरोधिने अरहन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितं प्रक्षालनैककारण मतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमतीर्थं लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञान प्रत्यवहत्प्रवाहं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयं शुक्लध्यानस्तिमितश्रितराजद्राजहंसराजितमस्कृत स्वाध्यायमन्त्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तशुकता सुभगं क्षान्त्यावर्तसहस्रं सर्वदयाविकचकुसुमविलसल्लतिकं दोस्सपरिशहाक्यत् द्रुततररङ्गतरङ्गभङ्गुरनिकरं व्यपगतकषायफेनं रागद्वेषादिदोषशैवलरहितम् आत्यस्तमोहकर्दम मतिदूरनिरस्तमरणमकरप्रकरं वृषभस्तुतिमन्द्रो द्वैकितनिर्घोषविविधवेगध्वानं विविधतपोनिधिपुलिनं सहस्रवसंवर्णनिर्जरान्यश्रवणं गणधरचक्रधरेन्द्र प्रवृत्तिमहाभव्यपुण्डरीकै पुरुषै बहुविस्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तु दुरितं दूरं व्यवहर्तु परमपावन मनन्यजय्य स्वभावभावगभीरम् अताम्रनयनोत्पलं सकलकूपवन्निर्जयात् कटाक्षचरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकत विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषत निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंसहिंसाक्रमात् निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् मितस्थितनगाङ्गजं गतरजोमलस्पर्शनं नवाम्बुरोह चन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयं रवीन्द्रकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियं हितार्थपरिपन्थिभिः प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यदभिवीक्ष्यो शुध्यते सदा विमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिमोथितं दृश्यते तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि स्फुरत्किरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्वयं पुनातु भगवज्जनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतं जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोद्यदि दोषोदयै मानस्तम्भासरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्युतयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्या शालकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्व्यावली च प्राकारस्फाटिकोऽन्तर्
ऋषिमुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयंभो वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरीयानि च मन्दिरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्जितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूदादकपुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये ए भवान् चन्द्राम्बोजशकण्डिकण्ठकनकप्रावृद्घनाभाजिना सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरुकुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलो जम्बवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकरुचके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारेञ्जनान्द्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भुवनमेतले यानि चैत्यालयानि देवासुरेन्द्रनरनागसमर्चितेभ्यः पापप्रणाशकर भव्यमनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालेभ्यः। इच्छामि बन्ते चैवते कावसोकुतसालोचम् आलोय तिर्लोये उड्डलोय मे किट्टिमानि जानजनचेयानि तानि सौवानि तिसुलुवेसु भवनवासे वाणमित्रजोषे कपवासयते चौविहासप देवासपरिवारा दिव्येन नानेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन अख्येन दिव्येन पुप्पेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन 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 धुवेन दिव्येन ना वासेन नित्यकालम् अच्छन्ते पूज्यन्ते वन्दन्ते नमंसन्ते अहमवे सन्तो तत्सन्तां सैनिजकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखौकमको भूविलाव सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्तिहोदमध्यम् अत वर्षायुगधारणवेलायां पञ्चमा गुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रीमदमरेन्द्रभुकुट प्रकटितमणिकिरणवारिधाराभि प्रक्षालितपदयुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या अष्टगुणे समुपेतान् प्रनष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्धे साचार श्रुतजलदीन् प्रतिर्शुद्धोरुचरणनिरतानाम् आचार्याणां पदयुगकमलानि ददेशरसिमेहं मिथ्यावादिमदोग्र भान्तप्रध्वंसवचनसन्दर्भान् उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितारे प्रणाशाय सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशकामेयबोधसम्भूताः भूरिचरित्रपदाकास्ते साधुगुणास्तु मां पान्तु जनसिद्धसूर्यदेशक साधुवरानमदगुणगणोपेतान् पञ्चनमस्कारपदये त्रिसन्ध्यमभिनोम्य मोक्षलाभाय येष पञ्चनमस्कार सर्वपापप्रणाशन मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं मङ्गलं भवेत्। अर्हसिद्धाचार्यो पाध्याया सर्वसाधव कुर्वन्तु मङ्गला सर्वे निर्वाणपरमश्रियं सर्वान् जिनेन्द्रचन्द्रान् शुद्धानाचार्यपाठकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या पान्तु श्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेष्टिनां लालितानि सुरादिश चूडामणिमरीचिभिः प्रातिहार्यजिनान् सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगाङ्गैरष्टभिः स्तुवे
इच्छामि बन्ते पंचमागवृत्तिकां सुकुदुस्सालोचिम् अट्टमा पाडिहीर संयुक्तानम् अरहन्तानम् अट्टुगुणसम्पन्नानम् उड्डुले मध्यमे पैठियानं शुद्धानम् अट्टपोयनम् आहुसंयुक्तानम् आयुर्यानम् आयारादिस्मरानुपदेशानं वज्जायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदा में नमं सामि दुख खो कमको वोहिलाव सुगैगमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति भूत मध्यम अथो वर्षा योग धारण बेलायां श्रीमद शांति भक्ति कायु सर्गम करोमि। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचय संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मकारयतीन्दुपादसलिलछायानुरागं ब्रवे क्रुद्धाशिर्विशदष्टदुर्जय विषज्ज्वालावली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतो यहवनैर्याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यो विस्मय संतप्तो तमकाञ्चन क्षितिधर श्रीस्वर्दिगौरद्विते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाप्रयान्तिं क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षत व्याघातनिष्कासिता नानादेह विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोक्येश्वरवङ्गलब्धविजयादत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण को वा प्रस्खलति एकेन विधिना कालोग्रदावानलान् नश्चाचेतव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पात्मादमृगेन्द्रभीमनिनदा ध्वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकरद्वितिहर प्राणिष्ठभामण्डल अव्याबादमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रादिभारश्रमं यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्र शान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथिवीतलेषु बहवः शान्तिर्थिन प्राणिन कारुण्यान्मवभाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदत शान्त्यष्टकं भक्तित शान्तिजनं शशिनिर्मलवक्त्रं शीलगुणं व्रतसंयमपात्रम् अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रं पंचमे वीक्षतचक्रधराणां पूजितमन्मिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च शान्तिकरं गणं शान्तिमभीप्सो षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसुवृष्टिर्धुन्दुविरासनयोजनघोषो आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेज
तं जगदर्चित शान्तिजनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मयि अमरं पठते परमां च ये व्यर्जिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्माः ये मे जना प्रवरवंशजगत्प्रदीपा स्थिरङ्करा सततशान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारे क्षणमपि जगताम् आत्मभूजे लोके येनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवत सुत्तं सर्वसौख्यप्रदाये तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभस्वदेश सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकाल भावसनुन्दत् सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतपते मुमुक्षुवर्गे प्रध्वस्तघातिकर्मान् केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जनेश्वराः इच्छामि वन्ते सन्ति भक्ति कामसुकुतसालोचिं पञ्चमा कल्याण सम्पन्नानम् अट्टमा पाढिहेरसय्यानं 34 सेविसे संयुक्तानं 32 देवेन्द्र मणिमय मौढ़मत्तय मय्यानं बलदेव वासुदेव चक्र ऋषिमुनि जदि अनगारो गूढ़ानं त्वयि सहस्रनिलयानं उषाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणं शयनिष्कालमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कम को विलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति भूत मध्यम अथ वर्षायुग धारण वेलायां श्रीमद् सिद्ध भक्तिम योगी भक्तिम चैत्य भक्तिम पंचमहागुरु भक्तिम शांति भक्तिम च कृत्वा तद्दिनादिकत्वा दोष विशुद्ध्यर्थम आत्म पवित्र करणार्थम श्रीमद् समाधि भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। स्वात्मा विगुसंमिति लक्षणं श्रुतचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वां केवलज्ञानचक्षुषा शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुते संगते सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगणगता दोषबाधे च मौनं सर्वस्यापि प्रेतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां भवे यावदेते पुवर्ग येन मार्गरुचिरण्य मार्ग निर्वेगता जनगुण सतोमते निष्कलंक विमलोक्ति भावनाः संभवन्तु मम जन्म जन्मनि गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भौत जन्म जन्मनि सन्न्यसन समन्वितं मरणं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि समार्जितं जन्म मृत्युजरा मूलं हन्यते जनवन्दनात् आबाल्या जनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया सेवासक्तविनय कल्पलतया कालोदया वद्गत त्वां तस्याफलमर्तये तदुना प्राणप्रयाणक्षणे पन्नाम प्रतिबद्धवर्णपटने कण्ठोस्वकुण्ठो मम तौ पादो मम हृदयं तौ पदद्वये लीनं तिष्ठतु जनेन्द्रताव यावन्निर्वाणसम्प्राप्ते एकापि समर्थेयं जनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिन पंच अरिञ्जेनामे पञ्चैमदिसायरे जने वन्दे पञ्चदशविरनामे पञ्चैषीमन्दरे वन्दे रयनत्रयं च वन्दे चौवीसजने च संवदा वन्दे पञ्चगुरूणं वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे
अरमित्यक्षरब्रह्म वाचकं परमेष्टिन शुद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्ट्यं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रेयो वर्षता मुच्चाटं विपदां च दुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसां स्तम्भं दुर्गमनं प्रतिप्रैततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता अनन्तानन्तसंसार सन्तते चेदकारणं जनराजपदाम्बुज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे याचेहं जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचेहं पुनर्पितामेव तामेव विघ्नौगा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जनेश्वरे इच्छामि बन्ते समाधिभक्ति कावसोकोदसालोचं रैणते स्वरूपरमपजानलक्कनं समाविभक्ति सयानिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ वोइलाव सुवैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होद मध्यम।